Hello students, the question is, an iron needle is kept near a strong bar magnet. It will experience option A force of attraction and no torque, option B, a force of attraction and a torque, option C, a torque and no force, and option D, neither force nor torque. So the problem is based on the topic magnetism, and in this particular problem, there is a bar magnet, strong bar magnet, and near this bar magnet there is iron needle. We know that bar magnet is having north and south poles where the field lines near the poles are very closer, and from the north pole the field lines originate, whereas for the south pole these field lines terminate or they end. So this is the situation, and when we move further apart from the poles, there is a more spacing between the field lines, and more spacing means the magnetic field B goes down as we move away from the poles. So this is the situation. This is the situation for the bar magnet, the magnetic field lines. Now suppose we place an iron needle here. So when we place an iron needle here, it may be at any orientation. For example, first of all, we take this orientation. So for this orientation, when the iron needle is placed like this, there is a generation of the poles in this particular needle due to the process or due to the effect known as electromagnetic induction. Due to electromagnetic induction, there is a generation of north and south pole inside the magnetic needle, in the iron needle. So here is the north pole, here is the south pole. North pole is near the south pole and the south pole is away, that is the other side. Now we know that there is a force on this pole N as well as on this pole S. Now force on a particular magnetic pole is given by the formula F equals to M into B. So F equals to M into B, where M is the pole strength. So it depends upon pole strength. This is the similar kind of a formula which we have used for the in electrostatics for the charge placed in electric field. Suppose there is an electric field and a charge is placed inside it, then this charge experiences a electric force Fe equals to Q into E. So similar kind of force also develop at the poles. So F at this particular position, suppose N pole, north pole. So this is given by the magnetic moment multiplied by the magnetic field strength at this particular point. Let this location be 1. So at 1 position. So it is MB1. Similarly, the force on the south pole Fs is given by M multiplied by B2. Suppose this is the point 2 and the field strength here at this point is B2. M remains same for the north as well as south pole, but the polarity is different. This is plus P, this is minus, this is plus M, this is minus M. So in this way there is a force on this particular pole also, south pole also. But we can easily see that north pole is nearer as compared to the magnet, whereas south pole is far away. And as we move far away, there is a decrement in the magnetic field strength. There is a decrement in B. It means that B2 is less as compared to B1. It means that Fn is greater than Fs. So there is a net force, and net force direction is towards the magnet. So this particular magnet will attract this particular needle. Similarly, if we place this particular needle at some other orientation, then also we can say that the field strength is different at these 2 points, north as well as south pole. So the magnet will attract it. So we can say that either option A or B may be correct. Option C and option D are clear cut, not possible, because no force, that is not possible. Force is there present. Now let us focus on the torque, whether there is a torque or not on this particular magnet. Now as we have studied in the electrostatics, torque equals to Pe sine theta, or we can say that P cross E.
where in the electrostatics we have studied that it is the dipole moment vector and this is the electric field. There is a similar formula for the torque in the case of magnet. In the case of magnet, we can say that the M cross B, torque is M cross B. So M basically the magnetic moment vector and B is the magnetic field. So if the angle between M and B is 0, then only we can say that the torque is 0. This is the possibility when there is an alignment of the magnet as well as the needle. That's the only case. But when there is a different angle other than 0 degree and 180 degree between the magnet as well as the needle, then in that particular case there is a development of torque, definitely. So only for one case, when the needle is in alignment with the bar magnet, then there is no torque, but for all other cases there is a torque here. So we can say that there is a torque. So option B is correct there, because it says that there is a torque. There is only one possibility where the torque is absent, but for all other cases the torque is present there. So in this way we can say that option B is correct here, nearly equal to the correct answer. So we have to choose this option. A force of attraction as well as a torque is there. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, आयरन नीडल को रखा गया स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के नियर, तो वो एक्सपीरियंस करेगी, क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करेगी या टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी, या टॉर्क और फोर्स दोनों को एक्सपीरियंस नहीं करेगी, या केवल टॉर्क या फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ये हमें एनालाइज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बार मैग्नेट की अगर बात की जाए तो बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। दोनों पोल्स के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फील्ड लाइंस डेंस होती हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेट के रेस्पेक्ट में, वैसे वैसे फील्ड लाइंस फार अवे होती जाती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि बी की वैल्यू घटती जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एक ऐसा केस है जो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अगर हम आयरन नीडल की बात करें तो ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और अगर इस पर्टिकुलर मटेरियल को हम नियर अबाउट लेके आते हैं बार मैग्नेट के, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाते हैं। और ये नॉर्थ और साउथ पोल जो डेवलप हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के ऊपर एक फोर्स लगता है, जो कि दिया जाता है इक्वेशन m इंटू बी। यहाँ पे m सेम रहेगा, साइन का डिफरेंस रहेगा केवल, लेकिन अगर हम b की बात करें तो b जो है अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग हो सकता है। एक पर्टिकुलर केस ऐसा भी हो सकता है लाइक दिस, नॉर्थ और साउथ ऐसे रखी हो मैग्नेट परपेंडिकुलरली, नीडल ऐसे रखी हो मैग्नेट के रेस्पेक्ट में, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक तरह से तो भी उस केस में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा कि एक इम्बैलेंस फोर्स लगेगा, जो कि इसको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क डेवलप हो जाएगा इस केस में। नेट फोर्स इस केस में, इसके अलावा कितने भी केस में हम बात करें तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स एक प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि बी जो है B1 B2 अलग अलग है इस केस में। तो इस तरह से फोर्स एक नेट फोर्स जो है अट्रैक्शन का हमेशा होगा टुवर्ड्स द मैग्नेट। अगर हम नीडल को यहाँ प्लेस करते हैं तो नीडल का साउथ पोल इधर नियर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा। अगर हमने जैसे यहाँ रख रखा है नीडल को, तो नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है। तो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट बात आती है टॉर्क प्रेजेंट होगा नहीं होगा। टॉर्क के लिए टॉर्क फार्मूला है m क्रॉस b, वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड b इज द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर हम एक कंडीशन की बात करें, जब अलाइनमेंट में है ये पर्टिकुलर नीडल, तब उस कंडीशन में एंगल 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, केवल उसी केस के लिए टॉर्क 0 होगा। लेकिन अगर नीडल का हल्का सा भी ओरिएंटेशन होगा, हल्का सा भी एंगल होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा एक टॉर्क प्रेजेंट रहेगा। तो हमें यही देख के चलना है कि टॉर्क टोटली एब्सेंट नहीं है। टोटली एब्सेंट होगा तो हम ऑप्शन ए चूज करेंगे, लेकिन अगर केवल एक केस को छोड़ के बाकी सब जगह टॉर्क प्रेजेंट है तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे, क्योंकि ये क्लोजली मैच ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।